Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav. Welcome to another episode of Daily News Analysis. As we know that the daily news analysis we do from Monday to Friday at 11:30 a.m. In this news analysis, we majorly discuss about the Hindu and Indian Express. Make sure if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Newspaper is very important things that most of the current affairs questions you would be able to solve, and what exactly we discuss in newspaper. So in daily news analysis, we majorly discuss about national news, international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous things. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, with any amendments, any bills which is in the parliament, which is very important. So newspaper gives you an immense idea like what kind of things that you should prepare for, and if there is any article, what are the important takeaways that you should know about it. So newspaper से आपको ये चीज़ें clear हो जाती है कि what is happening around us, so you will be become a very aware citizen, right? And aware होने से आपका अगर if you are aspirants, तो आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका मेजर सोर्स जो होता है वो आपके न्यूज़पेपर होते हैं. सो दिस इज़ द थिंग्स. एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, हियर इज़ द कोट दैट नोबडी कैन गो बैक एंड start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And as I told you, not each and every fact in the newspaper is important. Sometimes आपके आर्टिकल्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे वो रिपीट हो रही होती हैं, तो यू शुड नॉट टू बी कीप एन आई ऑन दैट, बिकॉज वो एग्जाम के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं. वो जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आपको मैं यहाँ पे ऑलरेडी शेयर करता हूँ. एंड वी हैव टेकन इनिशिएटिव क्वेश्चंस ऑफ द डे. सो एट द एंड में हम इसे विल डिस्कस अबाउट 5 क्वेश्चंस दैट गिव्स यू एन आइडिया कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. आप सारे अच्छे होंगे. और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लाइक कि अभी रिसेंटली आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में. सो नोबेल प्राइज़ व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़. नोबेल प्राइज़ के बारे में आपने देखी होगी कि ये जो आपकी स्वीडिश अकेडमी है वो उसे ऑर्गेनाइज करती है. नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में सो पिएरे एगोस्टनी, फ्रेंस क्रॉज और एनी ह्यूलर्स को ये एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस टू फाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो बेसिक थिंग्स इज दैट कि आपको इसमें ये फाइंड आउट करनी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एटम. सो एटम मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल विच इज नोन टू बी अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन एंड प्रोटीन क्या था हमारा प्रोटॉन को गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड, and neutron discovered by James Chadwick. So any atom made of 3 fundamental particle which is known to be a electron, proton और neutron. आपको my friends इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है कि ये इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स क्या होती है, until unless if your domain subject is science. बट आपको ये फाइंड आउट करनी है. कई बार वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 फॉर विच, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस होंगे 4 कि फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर प्रोटॉन, फॉर न्यूट्रॉन, फॉर डिस्कवरी एंड थर्मोडायनामिक्स, दिस टाइप के ऑप्शंस होंगे. सो द बेसिक nitty-gritty ऑफ द सब्जेक्ट इज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल. सो कोई भी एटम है वो 3 चीज़ों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कवरी करी, एक्सपेरिमेंटल मेथड को सर्च किया, और ये जो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में है वो उसने दी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस. नोबेल प्राइज़ जो था एक साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके ऊपर ये अवार्ड दी जाती है, एंड हु इन्वेंटेड डायनामाइट ऑन दैट टाइम. बात करें इसमें हम नेक्स्ट पे, ये है आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023. ये अवार्ड जो है आपका मिला फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल दैट डेवलपमेंट इफेक्ट ऑफ mRNA वैक्सीन. सो द मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस अबाउट द वैक्सीन, एंड जो यहाँ पे आपको देखा होगा जो आपकी न्यूक्लिक एसिड होती है, द न्यूक्लिक एसिड हैविंग 2 टाइप्स, वन इज DNA एंड सेकेंड इज RNA. Deoxyribonucleic acid
एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जितने भी वैक्सीन आपको देखते हैं mRNA वैक्सीन होती हैं फॉर द कोविड-19, राइट। और ये जो है आपको दिया द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये इन्होंने इस अवार्ड को दिया कैटलिन कैरिको एंड ड्यूवी स्मिथ। इन्होंने एक रिसर्च किया इसके ऊपर कोविड-19 के। सो दिस थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, द नेम एंड फॉर what purpose they got the Nobel Prize. Now there are a few things that you should know about the Nobel Prize. It was established by the will of Alfred Nobel, that was the inventor of dynamite. Is an explosive substance is dynamite. And the award to those who have conferred the greatest benefit to humankind during the preceding war. The first award were handed out in 1901. में फर्स्ट अवार्ड मिला। फर्स्ट इंडियन हु गॉट दिस अवार्ड इज रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर इन 1913। और वो लिटरेचर कौन सी थी माय फ्रेंड्स? दैट वाज लिटरेचर नेम इज गीतांजलि। इनके लिए मिला था इनको फर्स्ट इंडियन। सो नोबेल प्राइज जो है वो आपका फिजिक्स में जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, केमिस्ट्री रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन रॉयल एकेडमी ऑफ कालोन्स्का एंड लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी। पीस के लिए नोवेरियन नोबेल कमेटी और इकोनॉमिक साइंस को बहुत बाद में ऐड किया गया। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर। केमिस्ट्री को इन्होंने बाद में, सॉरी इकोनॉमिक्स को इन्होंने बाद में ऐड किया। सो प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड एट स्टॉकहोम, स्वीडन इन दिसंबर एवरी ईयर। सो दैट द पीस प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड एट स्टॉकहोम सेरेमनी बट प्रेजेंटेड annually in Oslo, Norway on the same day. So each Nobel laureate received a gold medal, a diploma and a monetary award. Now we move to the next one. Why is not Nobel Prize in mathematics, engineering, biology or environmental science? So Nobel Prize were designated to the will of Alfred Nobel and are in the physics, chemistry, physiology and medicine, literature and peace. So the Economics Prize was established much later and a memorial prize as indicated by its full name, and in addition was an exception to celebrate that was in 1968. Some facts about the Nobel Prize. So laureates receive Nobel Prize diploma and Nobel Prize medal and documents that detailing a Nobel Prize amount, which this year amount to 10 million Swedish krona. And Nobel Prize cannot be awarded posthumously. However, since 1974, if the recipient dies after the prize has been announced, they can still be awarded it. In this will, Alfred Nobel laid out who he wanted to be responsible for the selection of Nobel laureates. Just a second. सो नोबेल लॉरियट्स की अकेडमी जो है माय फ्रेंड्स ये दिसंबर में अवार्ड देती है ऑफिशियली, बट ये अभी इसकी ओनली अनाउंसमेंट हुई है, राइट। So in his will, Alfred Nobel laid out who he wanted to be responsible for the selection of the Nobel laureates. The prize were to be awarded by a Swedish institution. Just a second. In order to become a Nobel Prize laureate, you must first be nominated for a prize, and eligible nominator self-nomination is not allowed. So except the Nobel Prize, Peace Prize, the nomination is by invitation only, and nominators must fulfill the criteria set out by the awarding institution. Malala Yousafzai is the youngest Nobel laureate who got the Peace Prize in 2014 at the age of just 17 years. So this one you should know about the fact. So who select the Nobel Prize laureates? So in the last will the Royal Swedish Academy, just a second, yeah. So the Royal Swedish Academy of Science for the Nobel Prize in Physics and Chemistry, and Karolinska Institute for the Nobel Prize in Physiology or Medicine, the Swedish Academy for the Nobel Prize in Literature. So a committee of 5 persons to be elected by the Norwegian Parliament for the Nobel Peace Prize.
and here is World Press Freedom Index that was published by Reporters Without Borders. Wherever the index, make sure if any index we are talking about, make sure you should know about who published this, what is the rank of India, and which one country is in high, top and bottom. That's the important takeaway that is you should know about wherever you are talking about the index. So India's position 2020 is 161 by 180, where India stands now is 150 out of 180 countries. How neighbors are? Bhutan is a 90, Sri Lanka 135, Pakistan 150, Afghanistan at 52, Bangladesh 163. So India ranked 161st among the 180 countries with a score of 36.62 in 2020. India rank was 150. Norway, Ireland, Denmark occupy the top 3 position. What is the World Press Freedom Day? That is for the raise of public awareness of the value of press freedom, the importance of protecting journalist rights, and the importance of encouraging independent free media. So the day was proclaimed by the UN General Assembly in 1993, following the recommendation of UNESCO General Conference in 1991. The day also marked the 1991 Windhoek Declaration that is adopted by UNESCO. Now here is the next article. We talk about the Five Eyes Intelligence Alliance. How does the Five Eyes Intelligence Alliance make cooperation and closeness among member countries? And what was the stone ghost chosen as a secret collective database for sharing intelligence? So the recent allegation by Canadian Prime Minister Justin Trudeau linking the killing of Khalistan leader Hardeep Singh Nijjar on Canadian soil to the Indian government. Who are the Five Eyes? So Five Eyes basically, my friends, ये आपका multilateral intelligence sharing network है of 5 countries. और उस 5 countries में Five Eyes में कौन कौन सा है? One is we can say Australia, Canada, New Zealand, UK and USA. So it is both surveillance based and track signals intelligence, SIGINT. So intelligence documents shared between the member countries are classified secret, like Australia, Canada, New Zealand, UK and USA. So the alliance is between the US and the UK that involved around the Second World War, that is to counter for the Cold War Soviet threat. So the 2 countries which had successfully deciphered German and Japanese that code during the war. So initially the treaty called the British US Communication Intelligence Agreement, that is known to be a BRUSA. ये पहले initially sign हुआ था इनका, that is BRUSA, BRUSA. So BRUSA is basically that is British US Communication Intelligence Agreement, that is known as UK USA Agreement, that was signed between State Army Navy Communication Intelligence Board. उसके बाद how does the network work? Initially the partners are assigned respective SIGINT mandates. So what are the concerns? There have been several concerns regarding the privacy, security and method of working of the intelligence alliance, which remained shrouded in the mystery for long. So the Five Eyes Intelligence Alliance consists of the US, UK, Canada, Australia and New Zealand. So they share intelligence through a secret collective database known as Stone Ghost. So Stone Ghost is basically एक उनका collective database है इन सारे countries का, US, UK और Canada, Australia का, that is known to be a Stone Ghost. September 2016 में जो Five Eyes Alliance थे, that Oversight and Review Council was established. Right? So they are concerned related to privacy, security and operational methods of the intelligence alliance. इसके बारे में और आपने एक आर्टिकल्स देखी, एक आपका है बिहार का सर्वे दैट मे थ्रो अ चैलेंज टू 50% कोटा लिमिट. रिसेंटली अभी एक सर्वे हुई थी जिसमें बिहार में, जिसमें कि ओबीसी कोटा, एससी और एसटी, बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है. तो जो अपोजिशन पार्टीज है दैट विल तो एंटी फॉर इंक्रीजिंग रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, कंसिडरिंग द पॉपुलेशन दे मे ऑल्सो डिमांड सब कोटा इन वुमेन्स रिजर्वेशन, बिकॉज वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है अपना, उसमें हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की, नॉट फॉर द ओबीसी कास्ट.
So finding of the caste survey undertaken by the Bihar government, which were made public on Monday, that may open the door to challenge to 50% ceiling on reservation in jobs and education institute. आपको मैं बता दूं कि बिहार इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जहां पे आपको 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए. And the survey report released by Bihar Development Commissioner Vivek Singh shows that the other backward classes and extremely backward classes together constitute 63% of state populations. So this survey is an important simply because it can open the door for challenging the ceiling of 50% reservation currently in the place. So the 50% ceiling on reservation in jobs and education institution was accepted by the Supreme Court in India, Indira Swani versus Union of India. ये जो केस स्टडी थी, it is called Indira Swani versus Union of India. Indira Swani versus Union of India. In 1992, 5 years after the VP Singh government that announced the implementation of Mandal Commission report, which commended reservation for the other backward caste. जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन की, उसमें ओबीसी की बात हुई थी. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन. इसमें भी आप देखोगे 4 टेकवेज. सो इसमें द डेटा इज नॉट सरप्राइजिंग. सो बिहार गवर्नमेंट हैज रिलीज द result of survey in caste in the state, which put the share of extremely backward caste EBC and other backward caste. So the unreserved category so-called forward caste is about 15.5% आपके forward caste है. Nationwide data on the caste numbers were last released after the census of 1931. ये caste census के बाद first time release हुई. So what are the key findings of the Bihar caste survey? जो आपका extremely backward caste है are the biggest social group comprising 4,70,80,514 individuals, और that share 36.1% of the state population. जो OBC है आपका वो 27.12% है, and the scheduled caste जो है आपका 19.65% है, and scheduled tribes are around 1.6% only. So this is very surprising data. So जो आपके extremely backward caste है are a group of 130 odd castes that occupy the lower ranks of the OBC spectrum, that is dominated by the Yadavs or Kurmis, that is among the EBC like Mallah, उसमें आते हैं नई, नुनिया, धनुक and Kahar. और बिहार की जो population है according to the survey, that is 13 crore, right, as compared to 10.41 करोड़. इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट की है. सो ये सर्वे से जो आपकी ये गवर्नमेंट थी कर्पूरी ठाकुर, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अ फ्यू मंथ्स इन 1970 या 1971, उस टाइम में जो अदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट थी, ही वाज द फर्स्ट टू अनाउंस कोटाज विद द रिमेनिंग 12% फॉर द एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एंड 8% फॉर द ओबीसी. जो कर्पूरी ठाकुर जी की गवर्नमेंट थी, दैट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बट द पॉलिटिक्स ऑफ ईबीसी रिमेन द ग्री स्ट्रॉन्गर ओवर द डिकेड्स. लालू प्रसाद ने अपील किया था उस टाइम में द वाइड सेक्शन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट until the 1995 के इलेक्शंस के बाद. Now we move to the next one. Women share in assembly less than 10% in 28 states. आपको भी रिसेंटली पता होगा कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट टेबल्ड द वुमेन रिजर्वेशन बिल एज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस in the new Parliament House on Tuesday. So that was first introduced in 1996 the Lok Sabha by the H.D. Devegowda that led the United Front government, and the bill did not get the approval of the House. So as per the 128th Constitutional Amendment Bill, 128th Constitutional Amendment Bill 2023, the नारी शक्ति वंदन अधिनियम, that is the बिल का नाम है हिंदी में नारी शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम. That is looking for a third of the seats in Lok Sabha, and State Assembly is proposed to be reserved for women. However, the amendment to the Constitution comes with a
caveat that it can be implemented only after a delimitation exercise. Delimitation क्या होती है my friends? Delimitation is basically talking about like delimitation, which means the electoral boundaries. Electoral boundary. So after implementation, there should be at least 181, approximately 33.3% of seats, women members in the lower house. At present, there are 82 women in the Lok Sabha, which amounts of 15% of its members. So if you talk about त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पे त्रिपुरा है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस टेबल में. So ये विमेन की शेयरिंग क्या है? दैट इज़ लेस देन 10% इन 20 स्टेट्स, जहाँ पे आपको त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, राजस्थान, इन स्टेट्स में अगर देखें तो वहाँ पे जो विमेन का शेयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. मालदीव इलेक्शंस इन इंडिया. सो इसमें क्या है? मालदीव्स गोज टू रन ऑफ पोल्स this Saturday after no candidate secured more than 50% votes in first round of September 9. वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सोली. मालदीव्स गोज अ रन ऑफ. यहाँ पे मालदीव्स की इलेक्ट्रल सिस्टम जो है आपकी, दैट इज सिमिलर टू अ फ्रांस. तो यहाँ पे इफ़ नो वन क्रॉस द मार्क इन फर्स्ट राउंड, बिकॉज इंडिया में क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. And first past the post system clearly says that any candidates got 50% of marks then can achieve to form a government. So हम देखें मालदीव्स के बारे में. तो मालदीव्स has followed a system of executive presidency since 1978. It is followed by a single party system till 2008, and the president was elected for the 5 years through a referendum. And the first executive president of the Maldives, that is called Ibrahim Nazir, ये आप याद रखेंगे, that was in power of 1968 से 1978 तक. So with political protests erupting in 1978, Nasir did not contest for the third term, and Maldives Parliament chosen Maumoon Abdul Gamoon, the term transport minister, as the next president. Or Gayoom ruled the country for 30 years till 2008, quelling protests and famously defeating the military coup attempting India's held in 1988. सो मालदीव की जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज़ फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिंस 1968. सो मालदीव elect on national level head of state, the president and legislature. So the president is elected directly for a 5-year term by the people. The assembly Majlis has 88 members. जितने members होते हैं, that is elected directly for a term of 5 years from 88 single member constituency. और executive power जो है, that is exercised by the government. और जो president होती है वहाँ पे, that is head the executive branch and appoints the cabinet like many presidential democracies. ये 5 years alliance हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें वही है कि कहाँ से कैसे शुरुआत हुई. उसके बाद है आपका इसमें द सीक्रेट अलायंस जो है 1946 में US UK अग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA, ये जितने स्टेट से कोल्ड वॉर जब हुआ, कनाडा जॉइंस अलायंस 1948, दैट फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 1956. ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टरेट ASD, और इसमें 9 आइज अलायंस, 5 आइज, 9 आइज एंड 14 आइज. 5 आइज में आपके ये कंट्रीज़ हैं. मेक श्योर इस टाइप के जब कंट्री के नाम होते हैं तो यू शुड नो कि इसको आप ट्रिक से कैसे लर्न करोगे. कुछ भी आप नेमोनिक्स बना सकते हो इसमें. जैसे इसमें आप बना सकते हो U स्क्वायर CAN कैन. अब देखो U स्क्वायर है तो इट मीन्स दैट U स्क्वायर इट मीन्स पावर है 2 है, तो U स्टैंड फॉर USA, UK एंड C स्टैंड फॉर कनाडा, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड N फॉर न्यूजीलैंड. इस टाइप से आप ट्रिक्स बना सकते हो कि एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे विच वन ऑफ दीज कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ 5 आइज कंट्रीज. उसके बाद बात करते हैं 9 आइज कंट्रीज़ की. 5 आइज कंट्री में आपका आ गया, और उसके बाद इसमें 4 कंट्री और ऐड होंगे, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे. फिर 14 आइज कंट्रीज में आएंगी. इसमें आएगी जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन. सो दैट पॉसिबल थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूटर जिसमें आपका इजराइल, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे.
With reference to parliamentary committees, consider the correct statements. First one, all members should be elected by the House. It represents its report to the Speaker or the Chairman of the House. It must have the status of a consultative committee with any ministry at the center, and all are correct. So option B is correct. A parliamentary committee means a committee that is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker or Chairman. The works under the direction of a Speaker or Chairman that present its report to the House or to the Speaker or Chairman. It has a secretariat provided by the Lok Sabha and Rajya Sabha. The consultative committees, which also consisted of members of Parliament, are not parliamentary committees as they do not fulfill above 4 conditions. Next one, which of the following committee does not have members from the Rajya Sabha? Committee on Public Undertakings, Public Account Committee PAC, Estimates Committee, Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. So option C is the right answer. The Estimate Committee is a committee of selected members of Parliament that constituted by the Parliament of India, that is Lok Sabha, for the purpose of scrutinizing the function of government, ministries and departments in terms of expenditure and utilization of funds. It also suggests alternative policies in order to bring about efficiency and economies in administration. And the committee consists of 30 members that all selected from the Lok Sabha. There is no members from Rajya Sabha. World Trade Report published by IMF, WEF, ILO and WTO. So that is World Trade Organization. So the 2023 World Trade Report that is published by WTO explores the role of international trade in building a more secure, inclusive and sustainable world. Next one is Shreyas. Shreyas scheme was launched by the Ministry of Education, Ministry of Science and Technology, Ministry of Rural Development, Ministry of Finance. And Shreyas is launched by Ministry of Education. So, जो Shreyas है scheme है that consisting 4 central sub scheme that has played a significant role in empowering students from scheduled caste and other backward classes in India since 2014 to 15. और ये सभी schemes है are as follows: free coaching schemes for SCs and OBC, top class education for scheduled caste, national overseas schemes for scheduled caste, national fellowship for SC students. So these sub-schemes under the Shreyas umbrella have significantly contributed to the education and empowerment of scheduled caste and OBC students, enabling them to pursue higher education and excel in their chosen fields. और जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके लिए प्रोग्राम हमारे पास एकलव्य प्रोग्राम. And here where is the last question, that is Operation Sajak, that is conducted by the Central Bureau of Investigation, Enforcement Directorate, Indian Coast Guard and Indian Army.
So Operation Sajag, that is conducted by Indian Coast Guard. So Indian Coast Guard conducted a coastal security drill that is named Operation Sajag along with the West Coast. Make sure the name should be remembered. And इसका main purpose क्या है? To involve all stakeholders in the coastal security system, reaffirm the effectiveness of coastal security measures and raise awareness among fishermen at sea. So कहीं भी आपके जो भी operations होते हैं, कोई भी आपके defense और military exercise होते हैं, that is you should know about. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि कौन कौन से कंट्री के बीच में हो रही है, राइट, एंड व्हाट इज द पर्पस एंड व्हेन इट वाज established. The three important takeaways that you should know about it. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. That if you have any questions, please let me know in the comment section, and please share this video to your friends. And make sure if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. We'll meet you tomorrow at the same time for the daily news analysis. Till then, अपना ख्याल रखें. Bye bye and take care.